नमस्ते दोस्तों, आज हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है व्हाट इज लाइफ लाइक इन द आउटबैक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। ये एक रोमांचक वीडियो है। हाँ। इसमें हम ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज और विशाल ग्रामीण क्षेत्र यानी कि आउटबैक की अनोखी दुनिया देखने वाले हैं। अच्छा। हम जानेंगे कि वहाँ लोग कठिन मौसम, लंबी दूरियों जी। और सीमित सुविधाओं के बीच अपना रोजमर्रा का जीवन कैसे बिताते हैं। अच्छा। साथ ही हमें वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव और अलग जीवन शैली का एक करीब से देखने का मौका मिलने वाला। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो को और आप इसे देखें और इस पर अपना प्रतिक्रिया दें। मैंने तो अभी तक ये सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या जमीन तो बहुत है लेकिन आबादी बहुत कम है, तो जब तक मसला है दूर जाएगा तो आना भी है। बाबू भाई, मैंने न्यूज चैनल के माध्यम से मालूम करा था कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी इतनी पड़ती है कि जंगलों में आग लग जाती है। उसकी वजह से सरकार जो है कि उसको वो करती है ठंडा पानी के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से। और ऑस्ट्रेलिया की इतनी वीडियो अभी तक सामने आई नहीं है मेरे, ज्यादातर अमेरिका की आई है, यूरोप की है। बाकी ये बहुत दिलचस्प बात है। ऑस्ट्रेलिया में सर एक देश है तो उसको भी जरूर देखना चाहेंगे जो कंगारू से बड़ा फेमस है वो। मैंने ये सुना है कि जहाँ पर इंसानों की आबादी कम होती है वह वन जीव, वन प्राणी, वन पेड़ पौधे जो मतलब हरियाली है वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो बाबू भाई वो बिल्कुल हो सकता है। हाँ, क्योंकि अपनों ने कोरोना में देखा है कि जंगली जानवर शहरों में आ गए थे बंद होने की वजह से। पर ये बहुत अच्छी दिलचस्प वीडियो लग रही है, इसको लगाया जाए, एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। शुरू कर। At about 7.7 million kilometers squared, Australia is the sixth largest country on Earth and for the most part is extremely sparsely populated. Looking at a map of its population density, we can only really see a handful of urban areas. Excluding Perth on its west coast, most of these are concentrated on its east coast, southeast specifically. The area known as the Outback is in particular one of the least populated places not only in the country but the entire planet. अबे बाबू भाई तो अपन कर रहे हैं, चलो आबादी बढ़ाओ, शहर निकलो, कुछ भी तो नहीं है वहाँ पर। अबे इतना बड़ा देश है और जो गिनती हिंदी का आबादी है वो तो वो खाली बड़ा बड़ी तंजीकी बात है। Although a rather vague term in terms of its actual location, the Outback is generally this region here. It's an almost lifeless, remote, vast region which covers around 70% of the entire country, or about 5.5 million kilometers squared. अब ये जब तू देख 70 बड़ा इलाका तो ये खाली बड़ा तो कितना जगह होना चाहिए। मैं ज्यादातर सोच रहा हूँ कि जो आसपास के जो शहर बसे हैं वो सिर्फ समुद्र के किनारे ही बसे हैं, बीच में तो पूरा खाली पड़ा हो। हाँ, वो सोचते हैं नदी उदी को ये भी वो सोचते आगे क्या है भगवान ने देखते क्या क्या नहीं। As the boundaries of the region aren't set in stone, there is no exact measurement for how many people actually live in what is known as the Outback. But why do people actually live here? What is the largest settlement and what is life like there? Let's travel into the desert and find out. बाबू भाई ये तो बहुत बड़ी जटिलता होने वाली है क्योंकि बीच में रह रहा है, आबादी नहीं है, तो पक्की बात है जानवरों का सामना तो करना है इन लोगों को। So before we investigate what life is like there, let's take a quick look at the history of the Aboriginals and why and when they migrated to Australia. So Aboriginal Australians have lived in the outback for over 50,000 years. They originally migrated from Southeast Asia using very simple boats to reach Australia. Over time, they spread out across the country, adapting to the extreme conditions of the outback. One of those regions being what is now known as the town of Alice Springs, perhaps the most well-known city in the outback. It is also the most populated, with around 29,000 people calling the city home. So this is where the city is located, somewhat in the middle of the country. It's roughly a 29-hour drive away from Sydney or Perth, or a 15-hour drive from Darwin/Adelaide. यार बाबू भाई बीच में रह रहा है, 29 घंटे की दूरी है। सोचो आप, पहुंचने वाला बंदा भी जो है कि 2 दिन लगा के पहुंचेगा। ट्रांसपोर्ट का कुछ आता पता हो नहीं रहा। So the city is found just a little north of Lambert Centre, which is recognised as the official geographical centre point of the country. Now, when I searched for it on Google Maps, I thought it was just down the road, maybe an hour away max. But no, it turns out it's over 5 hours drive away, even though on a map it looks relatively close. The same applies to Uluru or Ayers Rock, which on a map looks like it's just around the corner, but in fact it's again about a 5-hour drive away. बाबू भाई इतना फैला हुआ इलाका है, इतना फैला हुआ क्षेत्र, भले कि दूरी दिख कम रही लेकिन है ज्यादा, और 5-5 घंटे टच कर रही है वो। बोला आबादी कम है, खुले खुले इलाके
नक्शे में देखने को छोटा है, लेकिन दूरी कितनी बड़ी है ये सब मालूम पड़े अपने को। So this is what the city actually looks like. It's a very small suburban town with low-rise buildings against a backdrop of rugged red desert landscapes. There are no tall buildings, nothing flashy or particularly stand out, just a sea of green trees and houses amongst the Martian-like scenery. The city is part of the Northern Territory and is actually the region's second most populated city, only behind Darwin. बाबू भाई मेरा तो जो है कि मौसम के हिसाब से अंदाज लगाया है कि जहाँ बसावट बस गई बस वही रहेगी, वो फैलेगी नहीं, क्योंकि आवागमन के मुझे साधन कम नजर आ रहा है बाबू, दूरियों की वजह से। पानी की भी कमी लग रही है भैया। अच्छा अंदाजा लग रहा है। हाँ अंदाजा है मेरा। हर चीज सूखी सूखी लग रही है। देख ला यहाँ रोड सूखे, सड़क सूखी, मतलब पानी कमी है। Showing just how low the population of the territory is, the city with 29,000 ranks second. For reference, the next largest city is Catherine, with just 6,000 people. In fact, the entire territory's population is around 232,000. आपने जो आबादी बताई इससे ज़्यादा हमारे छोटे शहरों की आबादी है भैया। The town is extremely unique and somewhat bizarre. It's a town where around half of its inhabitants live underground. As you'd expect from this region, the climate can be absolutely unbearable. In the summer, it regularly sees temperatures above 40 degrees Celsius, and the highest temperature ever recorded there was 48 degrees Celsius. बाबू भाई गर्मियों की वजह से लोग आधे से ज्यादा आबादी तो भूमिगत रह रही है, क्योंकि पहाड़ का भी अच्छा फायदा उठा रहा हूँ। जमीन जो ठंडी हो जाए जब तो वहाँ वो लोग रहना भी है। So for this reason, around half of its 1,800 population live in dugouts, which are essentially underground houses where temperatures are much cooler and livable. The town is primarily known for its opal mining, which is the field most of its residents work in. सर पहली बार देखने को मिल रहा है सर नजारा ये वाला सीन और ये ऑस्ट्रेलिया की इस प्रकार की जिंदगी पहली बार कभी नहीं देखी इससे पहले सर। अब किसी पहाड़ नहीं उनको काट के किसी घर बना दिए इन्होंने यार। However, in recent years, it's gained traction due to its uniqueness, creating a small but steady tourism industry. As well as homes, there is a church, hotel, restaurant, and museums found underground within the city. Now, when you think of the outback or deserts in general, you don't necessarily think of water or lakes for that matter. However, within the outback is where you'll find Australia's largest lake, Lake Eyre. During times of storms or heavy rainfall, the lake can cover an area of some 9,500 kilometers squared, a larger area than that of the country of Cyprus. कितनी बड़ी झील है? झील कितनी बड़ी 9500 किलोमीटर फैली। But for most of the year the lake is dry due to the arid climate of the region. So why and how does this body of water exist in the first place? Well, this is due to the fact that the lake is part of what is known as a closed drainage basin. Basically, if there is water, it has nowhere else to go but this lake. The lake then collects this water and then it eventually dries up in the heat of the summer. It's kind of crazy that the outback is so large that it touches almost every state in the country. अरे वाह भैया ये तो कहते हैं गुजरते ही है और ये देश है दुनिया का अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बाबू भाई मैंने तो देखा हिंदुस्तान में जहाँ नदी अपनी वहाँ अपनी बस्ती बसी हुई अच्छी खासी बसी हुई लेकिन यहाँ नहीं है ये तर्ज की बात है। It of course isn't in Tasmania as that's an island state with a more temperate climate which is lush and green. There are parts of Victoria that are semi-arid, but generally none of Victoria is considered to be part of the outback. And then there is ACT, which is the Australian Capital Territory, a tiny region that encompasses the capital Canberra, located much further southeast. Like Tasmania, has more of a temperate climate. Now, when you think of Queensland, Australia, what pops into your head? For me, I instantly think of tropical rainforests. However, that only covers around 10% of the state. बाबू मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पर आबादी वही है जहाँ पर हरी भरी हरियाली है जंगल है शुष्क जगह है गर्म जगह है रेगिस्तान है वहाँ आबादी बहुत नहीं के बराबर है। अच्छा बेटा मैं ये देख रहा हूँ जो बीच का हिस्सा है जो सेंट्रल है वहाँ ज्यादा हरियाली नहीं है इसलिए वहाँ आबादी नहीं है। And in fact, about 80% is arid desert/the outback. Within this 80%, we have Boulia, a town with a population of only around 300. This is what it looks like.
Again, similar to Alice Springs, it's a town full of detached low-rise buildings with not much going on and a red Martian-like background. There is one unique thing that goes on in this town, however, which is what it's nationally known for. यार मुझे घेरे हो गया ये सुनकर बड़ा मजा अजीब लग गया रेगिस्तान चले का मौसम हुआ जंगल चले का मौसम हुआ वो मंगल ग्रह वाला मौसम मंगल गिरह वाला मौसम हुआ तो हर जगह हर तरह का मौसम है बहुत अजीब लग रहा है बहुत अजीब लग रहा है मुझे यार So every year in the third week of July, it hosts Australia's national camel races. अरे वाह यार It's a 3-day event where people race on camels over a distance of 1,500 meters. The record of which is 2 minutes and 45 seconds, which is actually only 43 seconds faster than the human record. Found around 5 hours drive north of Alice Springs is Tennant Creek Airport, one of the country's smallest airports. Over the course of a year, maybe 10,000 people may use it. That's somewhere in the region of around 30 people per day. But who exactly is using an airport like this in the middle of absolute nowhere? Well, other than the residents of the nearby town of Tennant's Creek, you may have the odd tourist, mine worker or government official. ये बहुत अच्छी बात है बाबू कि दूर दराज के इलाके में एयरपोर्ट बना हुआ है मैं समझता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा नहीं ये क्या मुख्य शहरों को जोड़ने के लिए आवागमन के लिए होगा ये वहीं के लोग करते होंगे कोई आता नहीं होगा ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है मेन हाँ Now, as small as this airport is in terms of passenger numbers, it's actually got nothing on Biduri Airport found in Queensland. This airport typically sees around 1 to 200 passengers per year, seeing only around 40 to 50 flights for the entire year. Again, the only people who may use the airport are the odd tourists, government officials, and the residents of the nearby town, Biduri. एक छोटा हवाई अड्डा नहीं उस जैसे कहिए बहुत अच्छी बात है. A town with a population of only around 150 people. The town itself is of course absolutely tiny. However, the locality around the town covers an area of some 36,000 kilometers squared. That's larger than around 60 countries around the world. The town sits in the southwest of Queensland, not far from its border with South Australia and Northern Territory. It is found within the Simpson Desert, a region of Earth that pretty much looks like Mars. यार बहुत ही अनोखे अनोखे दृश्य देखने को मिल रहा है अनोखे अनोखे शहर हैं और ऐसे ऐसा नजारे कि वो रेगिस्तान देखो आप जैसे मंगल ग्रह हैरानकुन वाली बात. It's filled with rolling dunes of red sand and seemingly never-ending landscapes. Although most of the outback is generally very hot and in the summer almost unlivable, the sub-region of the outback often regarded as the hottest is Pilbara, an area of around 500,000 kilometers squared, found in the northwest of the country, Western Australia specifically. Around 50,000 people live in this region, giving a density of roughly 0.1 people per kilometers squared. An extremely sparsely populated region where most people work in what is known as FIFO, fly in, fly out. This is people who quite literally fly in, work solidly for around 2 weeks, and then fly back to have a week off, repeating throughout the year. वही बात वही बाबू भाई कि आम आदमी तो मैं जान नहीं दिया तो जिसको काम है नौकरी वही आ रही है वही जा रही है वही उड़ान भर रही है बस इसलिए कौन मिलेगा यार और एक बहुत अच्छी बात है बाबू भाई कि वो छोटे छोटे एयरपोर्ट बनने हैं बहुत अच्छी बात है समय कम लग रहा है जल्दी घर पहुंच रहा है वरना दूरी इतनी है कि 2-2 3-3 दिन लगे आने जाने में सफर में आधा महीना निकल जाए. बिल्कुल. The region consists of mainly rocky, barren land that absorbs heat during the day and then releases it in the night, meaning it's hard to ever escape the heat. Within this region is Onslow, a town which saw Australia's highest ever recorded temperature at 50.7 degrees in January of 2022. However, Onslow is actually found on the coast and is not classed as being part of the outback. अब तट पे स्थिति उसमें 50 डिग्री तापमान कैसे हो गया समस्या मार भैया यार अब पानी है सब कुछ है उसके बाद 50 डिग्री तापमान कैसे बन रही है मतलब मैं कहूँ बाबू कि पर्यावरण के माध्यम से भी बहुत जटिल इलाके हैं ये. हाँ बहुत जटिल इलाका है. It's a town where only around 800 people live. One particular point of interest in Australia, which mainly runs through the outback, is the dingo fence, the longest fence on Earth. It runs for some 5,600 kilometers. As the name suggests, it's a fence to keep dingoes out, which are wild dogs that roam the country. The fence was initially planned to be around 1,100 kilometers long, but then was gradually extended over time. By the early 1900s, it reached its final length of 5,600 kilometers.
stretching from northwest of Brisbane through the outback and ending on the coast of South Australia. अब यार देखो तू ये सोच को जो कुत्ते हैं उनको डेंगू नाम पे कुत्ते खसी करना कुत्ते के जिनको को बाल बनने बड़ी चीज और बाढ़ भी कितनी लंबी बढ़ी है हाँ यार, यार, मतलब कितने डेंजर होंगे इंसानों के लिए। फिर Like and subscribe for more content like this, and as always, thank you very much for watching. यार बाबू भाई तुम यकीन नहीं मानो, आखिरी में जो डिंगो का जो दिया, मुझे लग रहा था कि कुछ जानवरों की बात करेंगे वो, हाँ लेकिन वो लग गया अंदाज कि बाबू भाई जंगली जानवर भी बड़े खतरनाक होंगे कि आबादी बस जो किनारे किनारे रही है वही सेफ है, बाकी जो इधर बीच दूर दराज के बीच इलाकों में इनको जानवरों का खतरा जाता है अभी मौसम के साथ साथ। क्या हुआ चलेगा जो आउटलेट है वो वाकई में बहुत ही विशाल और बहुत ही अलग हटके लगा यार यहाँ का लोगों की जीवन शैली अपन लोगों में यही सब तो बहुत अलग ही लगे अपने बिल्कुल बिल्कुल। कठिन मौसम में लोगों का जीवन देखकर उनकी हिम्मत को पता चला बाबू कि बहुत मुश्किल से जीवन गुजारते हैं बाबू भाई। इतनी लंबी दूरियों के बीच में रहना आसान बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही आत्मनिर्भर और बहुत मेहनती है। क्या अगर इतनी मेहनत नहीं करें तो उसका जीवन नहीं कर सकते। आउटबैक की प्राकृतिक और उसकी सुंदरता देख के मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम से प्राकृतिक संसाधन और पानी का महत्व समझ में आ रहा बाबू। कम सुविधा में जीवन मिलता है वहाँ के लोगों के बहुत प्रेरणा भाई कि पानी भी कम समय भी कम उसके बाद वो लोग समय बचा रहे, बहुत बड़ी बात है भैया। बाबू भाई लोगों ने कठिन परिस्थितियों के देखते हुए अच्छी तरह से अपने आप को ढाल लिया है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है और अपनों को भी एक अच्छी वो मिल रही है, एक अनुभव मिल रहा है। अनुभव मिल रहा है अपने को, ताकत मिल रही है कि जब ये लोग गुजार सकते हैं ऐसा जीवन तो अपन तो बहुत अच्छे इसमें गुजार रहे हैं। बहुत अच्छे गुजार रहे हैं। बाबू भाई शहरों से दूर रहने की चुनौतियों को समझने का अवसर मिला अपनों को वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल समझ एक दूसरे की फायदा सही करो। ये भी है वहाँ तो इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा जी हिसाब से अपने को सुनना है वो जो तरीका है वो बहुत ही आसान लगा और अपने समझ भी आया कि नहीं कितने आसानी से कितने अच्छे ढंग से बिल्कुल अपने को एक एक चीज को उन्हें विस्तार से होता है, बहुत अच्छा लगा। बाबू भाई आज तक क्या आपने ऑस्ट्रेलिया भारत के मैच देखे हैं तो वो शहर वो चकाचौंध सिडनी की वो होटल वो अक्सर दिखाते हैं मैचों के दौरान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये रूप पहली बार देखने को मिला। सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार से निकल जाएगा यार, मतलब कहने का ये तू ये कहने का हाथी के साथ खाने को दिखाने का। हाँ वाकई बाबू भाई एक ऐसी जानकारी मिली जो सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया नाम सुना था कंगारू के माध्यम से, लेकिन ये एक अलग ही विचलित कर देने वाली जानकारी थी यार। बहुत मजा आया और ये अनुभव जो है कि इसको लेना चाहेंगे घर पे, हम बहुत अच्छा था और आगे लोगों को बताना चाहेंगे। विचलित करने वाली जानकारी नहीं थी, ये ज्ञान हाँ वो कह सकते हैं बिल्कुल। तो बोलो नहीं कह के क्या कर सकते भाई, शब्द जो चुनाव है तो सही से करो तो लोगों को समझ में आएगा। ये आदमी कहना के वाकई बाबू बहुत अलग हटके और बहुत अनोखी जानकारी थी यार, मजा आ गया सर, बहुत जबरदस्त जानकारी थी। मैं चाहूंगा इस प्रकार की और कुछ भाई साहब वीडियो बनाए, जरूर उसमें हम प्रतिक्रिया देना चाहेंगे और इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।